हज़रात, वेलकम बैक टू द 383rd एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। वन, द कंट्री मैनेजर ऑफ वीज़ा, द मल्टीनेशनल कार्ड्स पेमेंट सर्विसेज कंपनी। द अदर, द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ सेफ पे, जो कि एक स्टार्टअप है दैट अलाउज फॉर वेरी क्विक एंड वेरी सीमलेस पेमेंट गेटवे सॉल्यूशंस for your online businesses and e-commerce companies. Today we talked about a lot of things, from the fintech landscape in Pakistan to why startups are unable to succeed and sustain and grow. इसी के साथ साथ we talked about Visa's new She's Next grant program जो पाकिस्तान में वो लॉन्च कर रहे हैं, which allows for a substantial grant and mentorship for women-led Pakistani-based businesses and startups. तो उसके बारे में भी हमने बात की है. Trust me, if you are connected to a startup and or running a small business जो कि female-led है, that means at least one of the founders is a woman based in Pakistan, you should definitely hear this out. और if you know someone, उनको भी ये भेज दीजिएगा. It could be very very useful for them. But anyways, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. अगर आपके कोई थॉट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं. I would love to hear your thoughts and it really helps me improve the quality of the conversation. अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो नीचे सब्सक्राइब की लिंक यूज़ करके you can help support the channel and help us remain independent for as long as possible. But anyways, here is Umar Khan and Iman Urooj on TBT, Islamabad studio. उमर भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुज़म्मिल, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र. मुझे ये बताएं कि हाउ इज़ एवरीथिंग, हाउ इज़ लाइफ आजकल के हालात को मद्देनज़र रखते हुए? Life is all right, there are no complaints, there's a lot of promise to it, that's the way I look at it. राइट. Yeah. अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि कॉन्वर्जेसन करने का मकसद मेरे लिए पर्सनली क्या था. आई रिसेंटली मूव टू दुबई एंड पाकिस्तान में ना जनरली बहुत ज़्यादा हम कैश करते रहे हैं और कॉन्स्टेंटली कैश होता है. कितनी होती है वो रियलिटी होती है. वहाँ पर जाके आई वाज फेयरली सरप्राइज्ड कि पहले कैश हटा, फिर कार्ड आया, फिर कार्ड हट के अब मेरी घड़ी आ गई है. राइट. सो आई जस्ट मेरा फ़ोन बंद भी पड़ा हुआ है तो आई एम जस्ट गोइंग आउट टू वेयरएवर, ग्रोसरी स्टोर हियर एंड देयर, एंड वो घड़ी से सारी पेमेंट हो रही है. मैंने रियलाइज़ किया दुनिया तो बहुत आगे जा चुकी है. स्टडी करना शुरू किया तो समझ आई कि इन द प्रोग्रेशन ऑफ नेशंस जो इकोनॉमी का एक कोर एलिमेंट है, उसके अंदर फॉर्मलाइजेशन ऑफ पेमेंट्स इज़ एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो कि पाकिस्तान में वी आर जस्ट लाइक एक बोरिंग सी चीज़ है दैट बैंकर्स टॉक अबाउट, यू नो. एंड आई रियलाइज कि कितनी इम्पॉर्टेंट, इनहेरेंटली इम्पॉर्टेंट चीज़ है. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? I think before getting into that, I'd suggest try paying through a ring. I see that you're a fan, so you can now pay through rings as well. Really? Yeah. So you get it is the channels and the mediums are ever evolving. To touch upon the topic of cash, so yes, I think everybody knows that, you know that, I know that, and as an economy we have a lot of cash in circulation. Or moving money generally is not as easy, whether you want to move money from today to tomorrow, tomorrow to today, which means कि अगर आपने कर्जा लेना है, अगर आपने सेविंग करनी है, अगर आपने पेमेंट्स करनी है, and all of that has an impact on the kind of businesses you can run, the kind of efficiency you can bring. So, but having said that, what is interesting है कि अगर आप पिछले 2-3 साल की ग्रोथ देखें, and everybody from the State Bank of Pakistan to the ecosystem, partners, companies like ourselves, Visa, everybody has contributed to it, and there has been 200 to 300% growth in terms of digital payments. And if you look at the numbers, the trajectory is still upwards. So even in the current economic sort of situation. Even in the current economic situation, because we're a consumption-based economy, तो cash तो खर्च हो रहा है economy में, but उसकी conversion to digital, जिस growth जो speed COVID के period में थी, while we maybe not at that peak, but the trajectory is still upwards. कोविड के जो पीक्स आए थे उसके बाद डिप आए या उससे ग्रोथ कम हुई है, लेकिन एक्चुअली ग्रो ही किए हैं हम कोविड फॉरवर्ड? उससे बिल्कुल डिप नहीं आया, हम ग्रो ही किए हैं. सिर्फ ये हो रहा है कि कुछ जगहों पे टिकट साइजेस चेंज हो गए हैं. राइट. कि पहले 10 लोग थे और वो टोटल लेट्स से 10,000 का डिजिटल पेमेंट कर रहे थे, तो 15 लोग हैं
जो कि 10,000 की ही डिजिटल पेमेंट कर रही हैं. सो क्योंकि कंजम्पशन ज़रा आपकी इस वक्त अंडर प्रेशर है, लेकिन जो अप्रिसिएशन और एक्सेप्टेंस ऑफ डिजिटल पेमेंट्स है वो ग्रो कर रही है. मेक सेंस. मैं थोड़ा सा अगर स्टार्ट करूँ, आई वांट टू अंडरस्टैंड वेयर वर यू बोर्न इन अर्ली लाइफ, आपने कहाँ पे गुजारी? So I was born and bred in the Middle East. I was there until high school. वो जो पाकिस्तानी एम्बेसी स्कूल होता है या Pakistan Embassy School, Right. yeah. So yes, I was at the Pakistan Embassy School. How was that? It was very interesting. It was we were able to participate in many things. It had a robust extracurricular system. There were sports. There were scouting programs, other programs. और ज़्यादा पाकिस्तानी बच्चे होते थे या मल्टीपल? नहीं, I think 99.99% Pakistani बच्चे थे. Right. And at that time, at least, they were very active. We would have people like Amjad Islam just come over. People who were there on deputation from different government offices at the embassy. They would come and talk to us, talk about what the country is heading towards or going through, or what we could do, what are the opportunities. So all in all, I think it was a very enriching experience. Especially also because we were raised in a very multicultural society. There were Saudis, but there were also other nationalities that we interacted with, we played soccer with. And I think that's an important experience to have as children. I think it does help shape your perspective. Makes sense. So high school ke baad, where did you go for your university? So high school ke baad, then I find it amusing. I don't know if you would. High school ke baad, I actually came back to Pakistan and I was going to a medical school. I was enrolled in an MBBS program. Where? Well, I mean, it's one of the self-finance programs, so I'll not get into that. Right. But so I spent 3 months in MBBS and I realized that this is not what I want to do. But then there's a lot of conversation about unka pehla saal, I think us zamane mein kehlata tha the head and neck track or something like that, which is common for dental, neuro and plastics. And I thought maybe this is something that I want to do. So then I switched. 3 months later, I realized that this is also not something that I want to do. So then I shifted gears and I jumped ship. And then I did a bachelor's in business administration and I went to that track. From where? So there's a college in Lahore. It's called the National College of Business Administration. Right. And so my younger sister then is a doctor. And I have 2 sisters and 1 brother. And the one who's the youngest, she also then, explored this track in terms of studying psychology and stuff. But she also gave that up. And from what I hear, because then she went to Cordon Bleu and she's now trying to take up baking as a living. How interesting. Yeah. How interesting. And your parents are fine with the kids just going haywire with their... So I think they gave up, I think. Because I remember that conversation. I think I will remember it for the rest of my life. When I decided, I just packed my bag. The medical college was in Islamabad and I went to Lahore. Right. And I called my mother. They used to be in Saudi at the time. My dad was actually traveling and he was in the US. So I told my mother that this nahi ho raha, and this is not what I want to do, and these so and so are my reasons. She bought into it fairly quickly. Then she took on the role of convincing my dad. So my dad called and said, okay, this is what you want to do. That's fine. But from this point onwards, because now you've clearly grown up and you're making your own decisions, your decisions and their consequences are your responsibility. I will give you advice when you come to me. Right. And he's been true to his word. दुनिया भर में टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व कर चुकी है. अब आप घर बैठे एक मोबाइल फ़ोन से पूरी दुनिया में किसी किस्म की भी डिफरेंट एसेट्स, स्टॉक्स या इवन क्रिप्टो करेंसीज ख़रीद सकते हैं. जहाँ पर ये टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन आया वहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसे हैं कि इकॉनमी एक ऐसी जगह पर पहुँची हुई है कि बड़े आजकल बुरे हालात हैं. इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सेविंग्स हमारी डिप्लीट हो रही हैं. ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट्स करते ही नहीं हैं और जो करते भी हैं वो 90% लॉसेज अनफॉर्चुनेटली बनाते हैं. इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है Sarmaaya.pk, जो कि अपने फाइनेंशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेनिंग्स भी ऑफर करता है और डेटा भी ऑफर करता है, जिससे आप पूरी दुनिया की मार्केट्स, खासकर पाकिस्तानी मार्केट्स को बआसानी देख सकते हैं. अगर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आई वुड डेफिनेटली अर्ज यू टू चेक आउट Sarmaaya Financials प्लेटफॉर्म. इट्स अ रिमार्केबल प्लेस जहाँ पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स के थ्रू डेटा भी मिलता है, इन्वेस्टमेंट की एडवाइस भी मिलती है और ख़ासकर उनकी ट्रेनिंग्स जहाँ पर उनके एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपको
क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट और कमोडिटीज़ और एसेट्स के अंदर ट्रेड करके पैसे कमाना सिखाते हैं. सो चेक आउट द प्लेटफॉर्म एंड चेक आउट देयर ट्रेनिंग्स. नाउ बैक टू द पॉडकास्ट. But I think that's very progressive in a way, right? Like he allowed you to take your decisions, but also immediately instructed you कि भैया अब responsibility भी लेनी है. And I think that's where आप responsibility जिस दिन लेना शुरू कर दें उस दिन I think automatically you can perform a lot better. Absolutely. I think, so I agree because, and I also preach and hope that more and more parents, which I think now they're doing, this is the current generations are doing, is to help guide children and let them find their way versus dictating a path for them. And the second point I think is extremely critical. When you make your own decisions at a young age, I don't think you realize that not all decisions will work. If you ask some people in my circle, they would say even at this age I don't realize, but some decisions will work the way you want them, others will not. But both type of consequences then are yours to bear. Right. But similarly, I think in talking about progressive parents, because I have two sisters, there's a lot of stuff that I have learned in terms of resilience of people or women specifically, their capacity and their general kindness or compassion that they can offer, and that in many ways has shaped, and I think to this day is shaping how I evolve as a person. So the women in my life have clearly played a role. If you ask them, they'll say देर से सीखा है मैंने, but और अभी भी काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है. But I think these are important experiences that as a young child one can have. Makes sense. And what year did you graduate in? I graduated in 2001. Right. And so give me a summary of those 22 years since then. They've been very interesting. I actually joke in some of my smaller social circles that one day we could produce a web series if nothing else. So in summary, I went through my education wala silsila कि doctor नहीं बनना तो CSP officer नहीं बनना तो, and then I landed on a track. And just by the way, this is when call centers were burgeoning in Pakistan, and there used to be a company back then which was called Mobilink. It's called Jazz now. They had decided to expand their call center. Right. And by sheer stroke of luck, I went there and I got a job because I wanted extra pocket money. Straight out of college or while you were studying? I was actually studying. Right. So I would go there during the night shifts and go to college in the mornings. By chance, little did I know that the telecom and the connectivity business was just entering a growth phase. Right. And we were able to ride that wave. We learned a lot, made some great friends, and also we were able to grow as professionals. That helped me then switch to something called Fintech. Right. Which back then was, I think, known as mobile money or branchless banking. Easypaisa was just launching. 2006, 7? 2006, 7, 8. Right. And I was part of a big or a medium-sized team which comprised of people much smarter than I am who were responsible for launching Easypaisa. And that sort of put me on track for another growth industry. And then I was able to do this in some very interesting places. I did this in Pakistan. I then did this in Eastern Europe in countries like Montenegro, Serbia, Hungary, Norway. From there all the way to Burma, Myanmar. And Yangon was very interesting. Spent some time in Singapore, Thailand. So what that did was, it did two things. एक तो ये कि I was able to see कि this is not the entire reality of the world, the way we do things. यहाँ जो opportunities हैं, यहाँ पर जो challenges हैं, some of them are actually very common. लोग मुझसे पूछते हैं कभी कुछ एयरपोर्ट्स के बारे में, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स के बारे में, कि आपने ऐसा एयरपोर्ट नहीं देखा. अगर मैं कहता हूँ नहीं, अगर आपने यंगोन का एयरपोर्ट नहीं देखा तो अभी एयरपोर्ट देखने बाकी हैं. एंड देन इन 2019 आई केम बैक एंड आई स्पेंड सम टाइम विद Easypaisa. Life coming full circle, I went back to Jazz to run their government sales business for Jazz Cash, and then from there to Visa. So like I said, in terms of experiences, learning, some of the friends I made on the way,
the lessons I keep learning from the powerhouse that is woman in my life. All of that continues, but all in all, I think I have no complaints. And so currently you're the country manager for visa for Pakistan and Afghanistan. Yes. A lot of people tend to miss visa because वो backbone है और वो हमेशा है आपके कार्ड पे और इधर उधर, but वो नहीं भी है in a way, right? So if you are to just sort of give me a short summary of what your role entails and what does visa really do, because for an average consumer पाकिस्तान में पर्टिकुलरली टच पॉइंट ही नहीं है. दुबई में तो आप लैंड करते हैं एंड आपको बिल बोर्ड्स पे नज़र आ रहा है और दे रियली एडवर्टाइज एज वेल, बट यहाँ पर नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो. सो इफ यू कैन जस्ट सॉर्ट ऑफ शेयर. It's actually very apt. To be very honest, a lot of stuff that I've learned since joining Visa, I even did not know, or my perception was different as well. So I think कुछ चंद चीज़ें. एक तो ये है कि Visa, the core believes that we want to uplift everyone everywhere. By making payments easier, by making money movement easier. But essentially, to describe Visa, it's basically a network or a network of networks. It is a big network which provides connectivity, which enables multiple transactions, which gives you and our partners a multi-layered fraud control system. मैं आपको छोटी सी example देता हूँ. I use this example. I think it's an interesting way of explaining this. जब आप कार्ड टैप करते हैं, स्वाइप करते हैं, वो कार्ड 2 से 3 से 4 डिफरेंट मुल्कों के सर्वर्स पे जाता है. वो 2 से 3 से 4 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सिस्टम में जाता है. उसमें आपकी बेसिक, जिसको हम नो योर कस्टमर या KYC इन्फॉर्मेशन कहते हैं, वो चेक होती है. फ्रॉड कंट्रोल्स लगे हुए होते हैं, वो वैलिडेट होते हैं. और उसके बाद आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, उस ट्रांजैक्शन के लिए अवेलेबल हैं या नहीं हैं. सेम चेक्स उस दुकानदार, रिटेलर या मर्चेंट पे होते हैं और फिर वो कार्ड से पेमेंट होती है. लेकिन अगर आप अपनी एक्सपीरियंस की साइड से देखें, या हमारी, if I am the consumer, आप कार्ड टैप करते हैं, the payment is complete. Right. So all of that in the background is where the Visa network comes into play. Interesting. I hope I was able to paint a picture. Yeah, and we're going to get in depth further, but we have another guest with us today as well, Iman. First of all, welcome to the show. Thank you. मुझे थोड़ा सा ये बताएं, again, short summary, where were you born, early life कहाँ पे गुजारी? So I was born in Karachi, grew up in Karachi, went to school here. Then, no, we're in Islamabad, but I was born in Karachi, grew up in Karachi. I went and studied abroad for university. कहाँ से पढ़ा आपने? NYU. Right. और क्या पढ़ा? And I studied history and economics. Interesting. And then I graduated NYU and I actually started working in something like a startup. I went to Abu Dhabi to work in NYU's campus in Abu Dhabi when they were setting it up. I was one of the first 13 people on the ground. So there I was there for 2 years watching them set up this university. और ये कौन से year था? 2009 I graduated from NYU. I spent 2 years in Abu Dhabi. Uske baad I traveled for a couple of months. Then I came back to Pakistan and started working with my father in a food trading business. And we were a father-daughter business. And that's where I really learned how to sell and realized that I like selling. I really enjoy selling. It helped me connect the dots that in NYU Abu Dhabi, I did a lot of selling because I was the preferred tour guide for people to take, like guests aate the, Harvard, Dartmouth, all these places say to take them around Abu Dhabi. Take them to I've been to the Grand Mosque like 40 times, take them, but really kind of sell them on the idea of this university in the Middle East and Abu Dhabi as a city and the things it was doing. Then I spent quite a few years working in this food trading business that would bridge Latin Americans and Middle Eastern markets. What does food trading business entail? So we represented companies from South America, Europe, and we would sell their products in the Middle East market. Achha, and while based out of Karachi or? While based out of Karachi and Dubai both. Interesting. Yeah. And there I really honed my sales skills, realized what my values are around selling. And then COVID ho gaya. So the other thing I did along the way that grew me as an entrepreneur is I went to this boot camp held by MIT on entrepreneurship. And that really changed my perspective. I went back in 2014 and then I started mentoring for them. They asked me to mentor for them. I still coach and mentor for MIT on the side.
made me grow a lot as a person. The most important thing I think it gave me is that it made me look at problems as if they were opportunities. And I think when you're from a country like Pakistan, it really helps to look at problems like they're opportunities. And it helped me understand the startup world and, you know, tech startups and all of that. But COVID shuru hua, I wasn't traveling for my own work. So two of my friends were, one of my family friends and another friend of mine started Safepay. And my dad said, you know, you are sitting at home, stuck. Why don't you, because we were the father-daughter company, he said, you should help your friends out for the summer. Help them get customers, you're a good salesperson. I said, all right. So I started helping them out a bit. And I realized I loved it. It was a lot of fun. So I started taking on, you know, getting all the merchants for Safepay. And it kind of, I just got sucked in. I stepped away from my family business, and now I'm the COO of Safepay. And what does Safepay do? In the most simplest way. Simplest way, Safepay helps Pakistani businesses accept online payments. Right. From across the world or just from Across the Pakistan? world. Acha. Across the world, yeah. Interesting. Before I move on, I want to ask both of you, because you were born in Saudi. You moved out for work here and there, Myanmar and then Eastern Europe and so on and so forth. Clearly, you weren't bound by kuएं के mendak, which a lot of us were until we actually went out and realized there is opportunity in the world as well. And then you graduated from NYU. You worked in Abu Dhabi for a bit. You were working in a global business essentially. And so it would have been fairly easy for you to decide, listen, let's just relocate somewhere else and find opportunity there. Why are you still in Pakistan, both of you? Right. Yeah, go first. I think Pakistan is a very unique country. We're the 5th most populous country in the world. And the way you kind of, in a lot of areas, you get to have a blank slate that you don't in other places. And you get to use creativity that you don't necessarily everywhere else. तो फिर आपका दिल है आपको कैसे बनाना है, कैसे grow करना है किसी चीज़ को. यहाँ पे opportunity बहुत ज़्यादा है. And potential भी बहुत ज़्यादा है. So अगर आपको काम करना है, यहाँ पे बहुत काम है करने को. उमर भाई, अगर मैं इसी थॉट को आगे लेकर जाऊँ, इन्होंने वर्ड यूज़ किया अपॉर्चुनिटी एंड पोटेंशियल. जैसे जनरली मैं अपॉर्चुनिटी को थोड़ा सा डाउन करूँगा, बिकॉज अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि एक क्लीन स्लेट है, अपॉर्चुनिटी है, आप करें और आपको रिटर्न मिलेगा. इट्स अ डिफिकल्ट मार्केट. यू गेट लॉट ऑफ वेरिएबल्स, इट बीट्स यू अप एंड यू गेट टायर्ड. सो पोटेंशियल बहुत है, but really you really have to be a magician to find the right answer, and if you have that answer you can sort of get the returns as well, notwithstanding the current blip in the timeline. But if I were to ask you, because अगर मैं pertaining to digital payments बात करूँ, you were in a lot of markets जिसको आज हम जाते हैं और कहते हैं यार देखो वो भी आगे है, वो भी आगे, वो भी आगे, वो भी आगे, but you were there when none of that was happening and you saw that evolution as well, right? If I were to ask someone के मैं as a Pakistani, when I look at Pakistan today, I'm just like, यार पाकिस्तान में 10 साल हो गए, हम सुन ही रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, right? Because I don't have any other data to sort of correlate to. I don't really know how evolution happens even. मैं तो एक impatient आदमी हूँ जो कह रहा है कि यार दुनिया में हो रहा है तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा. आपके केस में you came back in 2019 and then उसके दरमियान में you've done 3 major roles, Easypaisa, Jazz Cash and now Visa. How do you see the Pakistani market compared to all of those early stage markets that you worked in? So I think I like what you used, the blip in a timeline. So ek to first and foremost, that's what I think this is, because economies go through different cycles, and depending on who you read or who you ask, this could be part of that cycle as well. But to answer your question, I think 2 factors. Ek to ye, because I've seen multiple markets where a more evolved digital payment landscape looks like, and I've been able to learn from that and absorb those lessons. And then when I use that lens to look at Pakistan and then I'll come to my experience in the last few years. So there is absolutely opportunity, but not just opportunity. That opportunity is also starting to unfold. आप देखें आपके just इस साल के पहले 3 quarters में स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पेमेंट ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, जिनको हम पॉस कहते हैं टर्मिनल्स पे, वो कि 100 मिलियन से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हैं. 4-5% की ग्रोथ उन टर्मिनल्स में आ रही है. 5 डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस अभी दिए हैं स्टेट बैंक ने भी, उन्हें चंद दिन पहले इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है टू गो अहेड एंड लॉन्च. सो ऑल ऑफ दीज गाइज आर कमिंग इन बिकॉज दे सी दैट अपॉर्चुनिटी. एंड
if I look back when I came this time around to now, a lot of the other participants of the ecosystem, government departments realize कर रहे हैं, traditional बड़े businesses realize कर रहे हैं, and they are looking for solutions. What I consider myself is to be very, very fortunate because Visa is a global company. They do this in 200 plus countries. And there are countries similar to us, there are countries much more advanced than us, and believe it or not, there are countries who are still a few steps behind us. So I have access to all that knowledge base, that product, and that investment that can and is being channeled into Pakistan. So all things combined, I think from a professional career point of view or an impact point of view, if I'm able to combine these things, if we're able to combine these assets that Visa has with and marry them with the opportunity that Pakistan presents, तो इसका impact बहुत बड़ा है. आज अगर आप डिजिटल पेमेंट्स को टीयर 2 सिटीज़ में उसी रैपिड स्पीड से ले जाते हैं जिस स्केल पे वो अवेलेबल है टीयर 1 में, तो सडनली चंद लाख लोगों का फ़ायदा होना शुरू हो जाता है. और इस तरह का इम्पैक्ट ज़िंदगी में करने के लिए बड़ा कम मौका मिलता है. या आप एंटरप्रेन्योरशिप राउट जाएं, या आप or there are other avenues where you do philanthropy and stuff. But this is another one of those opportunities, जो कि once in a lifetime opportunity लगती है मुझे. How important do you think are digital payments though? So let me switch the conversation a bit. For an average listener, I know for a fact कि वो इस वक्त ना पाकिस्तान में generally मैंने अपनी podcast से भी देखा है कि the appetite for technical conversations has gone really down because लोगों की ज़िंदगियों में fundamentals के इतने मसले आ गए, right? कि वो कह रहे हैं कि भैया I don't really care digital or non-digital, पेट्रोल सस्ता करो. But realistically, what does a 10-year outlook look like first in terms of digital payments for Pakistan? And second, is digital payments overall, banked population, digital payments, people being able to carry out their sort of transactions and financial whatever digitally and fluently, do you think उसका ताल्लुक है इकोनॉमी के साथ, या ये कंपोनेंट है कि अच्छा इकोनॉमी अच्छी होगी तो ये भी अच्छा होगा? बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज अगर इस बेस लेयर को बेहतर किया जाए तो क्या उसके कोई जीडीपी ग्रोथ के कोई रिपल इफेक्ट्स हैं या नहीं? सो आई थिंक टू स्टार्ट माई आंसर एब्सोल्युटली है. मल्टीपल रिसर्च, मल्टीपल आप बिल एंड मेलिंडा गेट्स को देखें, इंस्टीट्यूशन को देखें, वीज़ा फाउंडेशन को देखें, वर्ल्ड बैंक के कुछ एम्पिरिकल एविडेंस है. So absolutely advantages हैं in the overall growth of the economy, but this is a multi-layered sort of solution. अगर जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने डिफ़ाइन किया है उसको हम खोलना शुरू करें तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के मसले भी आएंगे, उसमें इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल चैलेंजेस भी आएंगे, उसमें दूसरे सवाल भी आएंगे. बट देन देयर आर सर्टन थिंग्स जो कि हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में हैं. You asked me, and this is actually one of my favorite things to do, to imagine and see what could success look like. What if, something is you're able to achieve something. So in 10 years, what I envision is that money should be easy. What that means is कि अगर मुझे पैसे खर्च करने हैं, मुझे पैसे कमाने हैं, या मुझे पैसे सेव करने हैं, या मुझे अपने बिजनेस के लिए, कंजम्पशन के लिए कर्जा लेना है, all of that should be much more efficient and ideally much more simple, and at the same time it should cost me less. और ये सारा कुछ जो है इसका सोल्यूशन लाइक आई सेड मल्टी लेयर्ड है, बट उसमें एक कंपोनेंट है ये रेल्स. इन रेल्स पे आप राइड कर सकें. अब मैं आपको इसकी छोटी सी, आई ब्रिंग ऑल दिस बैक टू अ सिंपल एग्जांपल जो कि मुझे बड़ी पसंद है. हो सकता है आप भी ये करते हो, मैं बड़ा कॉमनली करता हूँ. आपके गली के, मोहल्ले के, स्ट्रीट के आसपास कॉर्नर पे एक दुकान है और उसको आप व्हाट्सएप पे कहते हैं भाई दूध, पानी, कोक ज़ीरो ये ज़रा ड्रॉप कर दे, मैं आने का मूड नहीं हो रहा. वो आता है और साहब कहते हैं मैं पैसे कल दे दूँगा. राइट. वो लिख लेता है अपने खाते में. फिर 3-4 दिन वो वेट करता है, फिर वो आपको रिमाइंड कराता है, या नेक्स्ट टाइम आप जाते हैं तो आप उसको पेमेंट कर देते हैं. All of this could be converted into, and there are some startups out there who are trying to solve this problem and from multiple angles. कि आप उसे व्हाट्सएप करेंगे, आपका सामान आएगा, वो आपको डिजिटल पेमेंट का लिंक भेज देगा, या देयर विल बी अदर एवेन्यूज़, QR पेमेंट्स एट्सेट्रा. वहाँ बैठे बैठे आप पेमेंट कर देंगे, उसको भी पैसे फ़ौरन मिल जाएंगे, आपका कस्टमर एक्सपीरियंस भी बेहतर हो जाएगा. एंड देन जो उसको 3 दिन इंतज़ार करना पड़ता है
अपने वर्किंग कैपिटल में कैश वापस लेने के लिए, उसको वो भी नहीं करना पड़ेगा. तो एक छोटी सी एग्जांपल है जो आज हो रही है और ये सिलसिला चल रहा है, अक्रॉस द कंट्री चल रहा है. सो एंड देयर आर मेनी मोर एग्जांपल्स लाइक दिस. राइट. अगर मैं इसमें ईमान आपसे पूछूं, बिकॉज डिजिटल पेमेंट्स की या बैंक पॉपुलेशन की जब बात आती है ना, तो और ये मेरे साथ भी मसला हुआ रिसेंटली, सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है. इन दुबई आई वेंट टू माई बैंक मैनेजर एंड आई सेड कि लिसन, लाइक एक्चुअली मेरी बेगम ने एक दिन आके मुझे बोला कि यार आपने तो अकाउंट खुलवा लिया, मैं आपके कार्ड से कर रही होती हूँ, मुझे सिस्टम चाहिए. तो मैं अपने ब्रांच मैनेजर के पास गया, मैंने जाके बोला, मैंने कहा यार मेरी बेगम को वो चाहिए. उन्होंने कहा जी क्यों चाहिए, किस खाते में चाहिए, और जो लिस्ट ऑफ सवाल उसने मुझे दिए, तो आई वाज लाइक यार ये तो आई मीन इट्स सच अ स्मॉल thing, but women getting into the whole financial sort of space, it's a global problem, but पाकिस्तान में तो वो बहुत वाज़े है, राइट? आपको अपने वालिद साहब से लेटर चाहिए या आपको अपने हस्बैंड से लेटर चाहिए है, एंड देयरफॉर उनकी कॉन्स्टेंट डिपेंडेंसी बनी हुई होती है. जब कॉन्स्टेंट डिपेंडेंसी बनी हुई होती है तो इन अ लॉट ऑफ वेज उनके दिमाग में वो थॉट ही नहीं बनती कि फाइनेंस का आइडिया होगा तो फिर फाइनेंस को बेहतर तरीके से मैनेज भी किया जाएगा, राइट? What has your experience been? I know you're not exclusively focused on that. आपके general payments है, but what are we doing about women in the banking space in Pakistan? Because I've spoken to multiple people on that on the podcast as well. People say we need to do something. We haven't been able to see very clear steps for it. If I were to ask you, what's the फायदा क्या होता है? Because you're in the space. And dusra, are there any tangible steps that you're seeing happening around us in Pakistan to get women onto, the financial independence, financial inclusion space? I think so. हमारा वास्ता ज़्यादातर entrepreneur से होता है because we help businesses accept payments. And I think अगर generally if women are able to join the economy on an equal footing with men, research shows that the global GDP would increase by 6%. So for women and men to join the economy equally is actually good for everyone. And I come across women entrepreneurs all the time, and the work they're doing is incredible. They are running businesses. I think where they can be helped is that they can be given more access, more mentoring, more support, like a good network. And then they're ready to thrive. I think ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, बिकॉज पाकिस्तान में जो करंटली इस वक्त जो इकोनॉमी की सिचुएशन हुई हुई ना, एज ए आई डोंट नो हम क्या कहेंगे, डेवलपिंग से मिडिल इनकम की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं या अंडर डेवलप से डेवलपिंग की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं. बट in a lot of ways, and we've seen that happen across other markets as well, मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा, इवन अपने रीजन में लेफ्ट राइट, कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है, इकोनॉमीज करेक्ट करती हैं अपने आप को, तो डबल इनकम हाउस होल्ड्स बिकम अ वेरी एक्टिव थिंग. पाकिस्तान की कल्चरल implications हैं. अ लॉट ऑफ टाइम्स आई नो फॉर अ फैक्ट, आई एम फॉलोड बाय अ लॉट ऑफ गर्ल्स ऑन इंस्टाग्राम. आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस सेइंग कि लिसन, मैं कुछ करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू हेल्प माई फादर, माई हस्बैंड और हुएवर, कि मैं घर के हाउस होल्ड इनकम को करूँ, पर मैं बाहर नहीं जा सकती. एंड मुझे कोई अपॉर्चुनिटी बताएं, मुझे कोई ऐसी स्किल बताएं जिससे मैं घर बैठ के काम कर सकूँ. एंड जब खासकर आप घर बैठ के काम कर रहे हैं ना, तब तो डिजिटल इज सुप्रीम, राइट? डिजिटल इज सुप्रीम. चाहे आप बात करें कि मैंने ई कॉमर्स का काम करना है, मैंने कोई स्किल बेचनी है, मैंने वो करना है. जब आप घर से बैठ के डिजिटल पे काम कर रहे हैं, तो फिर डिजिटल पेमेंट्स इज डायरेक्टली देन द नेक्स्ट स्टेप वेयर यूर लाइक ओके ये तो हो गया, बट हाउ डू आई गेट पेड? वो वही वाली बात है कि फिर आप क्या करते हैं कि आप काम करते हैं, काम करके आखिर में आप कहते हैं यार ये मेरे हस्बैंड का अकाउंट है, ये अकाउंट है, ये वो अकाउंट है. जितनी कॉम्प्लिकेशन आती है उतना ज़्यादा जो पेइंग पार्टी है उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी आती है टू अब्यूज़ द सिस्टम, राइट? कि मैं पेमेंट देखूंगा क्या करना है, किस तरह करना है. दे डोंट हैव द विजिबिलिटी. सो इन टर्म्स ऑफ कि अब जो चेंजिंग टाइम है, मुझे लगता है कि एक तो हम एक ज़माने में बात करते होते थे कि मोर एंड मोर वुमेन नीड टू पार्टिसिपेट. आई थिंक दैट्स गोना हैपन इररिस्पेक्टिव, लाइक इट्स विद द एनर्जी बिल्स. Women are already now thinking, listen, like we need to participate in this space, and we need to be more empowered in terms of financial matters. But now अब वो स्टेप ये आ गया, आपने बोला कि मेंटोरिंग, उनको राइट टूल्स अवेलेबल होना. आपके केस में जिस तरह you mentioned कि SafePay allows for taking payments and connecting Pakistan to the global economy, but in a simple way, effectively वो ये कर रहा है कि यार ऑनलाइन मैं अपने कार्ड से या किसी उससे जो है पेमेंट्स कर सकता हूँ. जी. How many women entrepreneurs are you working with? What has your experience been working with them? And in terms of a lot of these women that you're working with, I don't know आपको कितना insight है,
but where are they in terms of maturity as entrepreneurs, as people who you can say कि like, listen, अगर हम इनको mentorship दें, अगर हम ये करें तो ये बहुत आराम से scale कर सकते हैं? I would say I'm very impressed when I see जो काम कर रही हैं women, and like you said before, I'll just take you back to what you were saying before कि अब तो like women want to work from home and all of that. The internet is a great equalizer. अब आप घर पे बैठ के you don't need to go formally to school. You can learn how to do so many things on YouTube, wherever, and you can start participating in the economy. And the beauty of the internet and digital payments is आप घर बैठ के आप global economy join कर सकते हैं, which is excellent. And Pakistan needs that right now a lot. And one of the interesting things we see is एक तो there are women entrepreneurs that who we work with. दूसरा, they are transacting with people outside the country actually, and that's what digital payments allows them. Because when you say कि ठीक है economic times are tough and all of that, the most important thing digital payments help you do is transact with the outside world. And the Pakistani diaspora is actually buying from Pakistan. So Right. many of our brands, which are apparel is our strength. Apparel exports really well abroad. Shadi ke kapde, this and that. Pakistani diaspora is buying from Pakistan. It's the best thing they can do for us is buy from us. And they are. And it's like a 12 billion diaspora. Yeah, and it is buying, it is transacting with us. बहुत सी And it's कंट्रीज की great to टोटल see. पॉपुलेशन इतनी है जितना आपका पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ है, तो अगर आप उसी को एज अ कंज्यूमर बेस यूज करें, you can bring in a lot of dollars People to are doing it Pakistan. more and more. The more Yeah. entrepreneurs I talk to, the more they're doing it because of their buying power be strong. So I think these women are growing. What they need is maybe just a bit more support so they can grow further to kind of scale their own businesses, but they're doing great work. Right. I know for a fact that you guys actually went through an initiative as well early on with Visa. Yeah. What was that? So we participated in the VEI Visa Everywhere initiative about Right. 2 years ago. There was a competition. We were the only Pakistani fintech in that competition. I represented Safepay and had a lot of mentoring from Visa. I think we had about 2 weeks to prepare for the competition. I had a mentor assigned to me, and the best thing about that program was it helped me get our narrative together. Because for a startup and a business, it's very important to tell their story. Right. And when you get some kind of mentoring and somebody teaches you like how do you pitch, how do you tell someone what you're doing in the smallest way, right? I mean, Safepay dominates my life. I could talk about it for 2-3 hours. But Right. if I want to tell an outside stakeholder in 4 minutes or 3 minutes, that kind of coaching really helped. Then we participated in this competition. There were startups from Ethiopia, Georgia, Nigeria, and then Safepay won the audience award, fan favorite. So Interesting. we won $10,000. और ये fintech exclusive था? Fintech exclusive. So what were some of the other startups, like अगर आप compare करें पाकिस्तान में जो आप लोग कर रहे थे and place yourself in competition with a lot of what was happening across the world, where did you stand? I mean, everybody was solving a different problem related to fintech. You know, Georgia mein they were doing something like the one in Georgia was doing what we were doing in Pakistan. Right. So there are other countries like us. There are other countries like us. The one in Ethiopia was doing something like Sadapay. Like there were Right. people solving different. So very similar. So in that aspect, like आपको मतलब हमारे यहाँ काम हो रहा है फिर, क्योंकि I'm बहुत really काम हो रहा है. एक despondency है. I really try hard to tell people कि यार ठीक है, चलो times are tough, but we'll be out of it hopefully. And the problem is अगर हम despondency में रह जाएं, sentiment makes a big difference. But अगर हम बोलें कि नहीं, let's all work together because we're a young population, हमारे में जान होनी चाहिए. Let's all work together करना तो and है आगे ना. बढ़े ना. करना तो है. Problems हैं solve करने की. अगर साथ काम करेंगे तो फिर आगे बढ़ सकेंगे. Makes a It lot was of a very sense. good experience with Visa, and then we had the thing because it was audience favorite, so people voted for us online. Right. And once we recorded it, मैं तो election लड़ी. I rallied all my family, friends around the world. I was like, you know, but people showed up. It was good because it was during COVID. Helped me Right. feel very close to my global family. Everybody voted for Safepay. The other day I discovered that someone from Visa also voted for us. But so we won, which was a great experience. Very cool. Yeah. उमर, अगर मैं आपसे पूछूं, again as a consumer, I just feel like again trying to answer the despondency bit. There's a very common narrative which I've said a few times as well whenever I speak to a sort of fintech person, कि हम पिछले 10 साल से एक ही वो सोच रहे हैं, सुन रहे हैं कि यार वॉलेट्स आ जाएंगे, एवरीबडी विल बी ऑन डिजिटल पेमेंट्स, कैश ख़त्म हो जाएगा. और वो मोर ऑफन देन नॉट उसका रिजल्ट ये आता है कि आपके पास एक वॉलेट है, अगर 50 वॉलेट हैं और 50 के 50 वॉलेट जो हैं वो आपके मोबाइल में क्रेडिट डाल सकते हैं, और वो वेरी बेसिक रूडिमेंट्री बिजली के बिल दे देंगे, थोड़ा सा ये कर लेंगे.
बट बाय एंड लार्ज वो शिफ्ट नहीं आया जो कि हमें सुनने को मिलता है कि यार इंडिया में तो ठेले वाला भी QR इस्तेमाल करता है। अच्छा 2019-20 में जब मैं बात कर रहा था तो मुझे काफ़ी लोग आके कहते थे कि यार रेल्स का मसला, आपने अर्ली ऑन इसके बारे में बात की, और उन्होंने कहा कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर we will only build on top of what is available to us. And so early on, I was asked to have patience for Raast that was going to come in and that was going to change everything. Raast's been there now for almost a year or more than that. And again, for an average consumer, you don't see that shift. फिर दरमियान में Raast के बाद हमने सुनना शुरू किया कि यार 1 QR आने वाला है और वो ये करेगा कि अभी जो आपको हर वॉलेट का डिफरेंट पर्चे लगे हुए हैं विच इज़ मेकिंग अ वेरी एक्सक्रूशिएटिंग एक्सपीरियंस। तो एक 1 QR की एक प्लेट लग जाएगी एंड देन एवरीबडी कैन पार्टिसिपेट इन दैट। वो भी अभी तक हमें उसका इम्पैक्ट नहीं नज़र आया। एंड देन थर्डली मुझे याद है कि विद इन दी मेरी बैंकिंग ऐप थी, एक दिन मैं गया इधर पेट्रोल भरवाने, तो उस पर बड़ा सा उन्होंने बैनर लगाया हुआ था कि अगर आप QR से पे करेंगे, कार्ड से ही मैं पे करता हूँ लेकिन वो QR कनेक्टेड कार्ड से अगर आप पे करेंगे तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने जाके उस बंदे को बोला, मैंने कहा भैया वो आपका बैनर लगा हुआ है वो करवाना है। उसने कहा सर 1.5 रुपये का मुझे आइडिया नहीं है कैसे होता है, कार्ड से ही होगा। फिर मैंने कहा अपने मैनेजर को बुलाओ, मैंने 20 मिनट, क्योंकि मुझे खुद शौक है तो मैंने मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने कहा वो हाँ एक फ़ोन है उसमें टेक्स्ट आता है, 1 सेकंड में वो फ़ोन ऑन करता हूँ। उसने चार्जर लगाया, फ़ोन ऑन किया। दैट वाज द लाइक इतना कम वो इस्तेमाल हो रहा था कि वो लिटरली दे हैड टू मूव द डस्ट टू फिगर दैट आउट। सो सम हाउ कंज्यूमर बिहेवियर भी ऐसा है कि वो चाहता ही नहीं है कि यार हम डिजिटाइज हों, हम डिजिटाइज्ड होंगे तो ट्रेसेबल होना शुरू हो जाएंगे, टैक्स की implications आ जाएंगी, 10 और मसले आ जाएंगे। How do you see the evolution that we've had over the last 15 years, and particularly for an average consumer like you mentioned कि जी tier 2 cities में हम चले जाएं, मेरे स्कोप में तो अभी tier 1 भी fully cash dependent है। Everybody has a debit card here and there, but they don't necessarily use it as part of their daily experience. Interesting. When you were saying that, I was just thinking, I actually rarely carry cash now in the bigger cities. It's not that I don't need it. There are times when I need it, but now that I think about it. But anyways, coming back to your question, I think पहला तरीक़ा तो ये है कि generally to look at things when you look at this situation, मैं इसलिए बार multi-layer कहता हूँ, that's true for life as well. सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं. There are environmental factors, there are factors which are macro, global economy pegged, and there are factors जो कि आपके circle of influence में हैं. So, और जो आपके कंट्रोल में फैक्टर्स हैं, there are changes where you can either support or influence. एक तरीका इसको देखने का ये है कि अगर आप सोचें 4 या 5 साल पहले या चंद साल उससे पहले भी, ये बड़ी मुझे अच्छी एग्जांपल लगती है, कौन सोच सकता था कि पाकिस्तान में ख़वातीन एक तरफ, मर्द हज़रात भी किसी स्ट्रेंजर, किसी अजनबी के साथ गाड़ी में बैठ के पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाएंगे। और आज वुमेन आर द बिगेस्ट बेनिफिशरीज ऑफ दिस सर्विस। सिमिलरली जो आपने कहा वॉलेट की बात की, आपने क्रेडेंशियल्स की बात की, अगर आप नंबर्स देखें तो वो 40-50 मिलियन इस वक्त क्रेडेंशियल्स मार्केट में हैं, बट उसको बजाय इस तरह देखने के, आई वुड रिक्वेस्ट टू टेक अ व्यू बोथ फॉर यू एंड द लिसनर्स कि लास्ट टाइम आपके वो वाली इंटरेक्शंस के प्लम्बर को आप कैश देते थे, आपके पास फूड डिलीवरी का राइडर आ रहा है आप उसको कैश पे करते थे, आप की सर्टन अदर चीज़ें हैं जिनको आप कैश पे करते हैं। आज तकरीबन उन सब के पास वॉलेट्स हैं और उनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनकी प्रेफरेंस है। COD वालों के पास वॉलेट्स हैं, वो आते हैं वहाँ कहते हैं कैश नहीं है, वो पहली दफ़ा वापस जाता था, अब वो कहता है कि सर ईजी पैसा करते हैं। बिल्कुल ईजी पैसा करते हैं, एब्सोल्युटली। वो उनके पास वॉलेट्स हैं, मल्टीपल वो हैं। अब लेकिन उसमें भी फिर ये है कि इसको अगर आप कंपेयर करें, आप 5 साल पहले करें तो आपको शिफ्ट और ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी क्लियरली नज़र आएगी। अगर आप 6 महीने पहले देखें तो वो आज भी आया कहता है कि सर वो पैसे निकलवाने मुश्किल होते हैं मेरे लिए, जबकि ATM कार्ड है। सो दूसरा फिर फैक्टर ये है, एक आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, एब्सोल्युटली। दूसरा आपने कंज्यूमर बिहेवियर की बात की, दैट आई थिंक इज़ शिफ्टिंग। देयर इज़ अ बिग फैक्टर विच इज़ अराउंड लिटरेसी एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। एंड देन अगेन स्टेट बैंक, आवर बैंकिंग पार्टनर्स, अदर पार्टनर्स ऑफ द इकोसिस्टम, हम उसमें कोशिश कर रहे हैं। बट टू कंक्लूड ऑल ऑफ दिस, टू पैकेज दिस इन ए कंक्लूजन, ये है कि अगर हम देखते हैं ना कि यार 3 महीने पहले से और अब में कितना फ़र्क आया, तो फ़र्क ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन आप 5 साल पहले प्री कोविड, पोस्ट कोविड अपनी ही ज़िंदगी के डे टू डे में देख लें तो यू विल सी दैट देयर आर मोर एंड मोर डिजिटल पेमेंट टच पॉइंट्स
And I am fairly confident, given the initiatives we have planned for the market as an ecosystem, not just as Visa, that this is only going to go upwards. What's the experience been with, if I were to ask you, मैंने earlier भी mention किया, Raast and 1QR काम सुन रहे थे. Do you have any insight on that? Yes, and I think there are multiple sort of components to the ecosystem, and Raast is a very important ecosystem play. State Bank has done actually a remarkable job at it, और हम actively हमारे सारे partners के साथ काम करते हैं. We have some solutions जो उसको further complement कर सकते हैं. So we're in active conversation with them. So I think it's going to be, अगर आप advanced developed markets भी देखें, you referred, आपने दुबई एक दो दफ़ा एग्जाम्पल दी है, तो एक पेमेंट मेथड नहीं है कहीं भी. आप घड़ी से अगर पे कर रहे हैं तो कोई अंगूठी से भी पे कर रहा है, राइट. कोई आज भी कार्ड से पे कर रहा है. आई एक्चुअली पर्सनली नो समवन कि आप यू कैन जस्ट टैप योर फोन, बट आई नो समवन दैट दे प्रेफर टू स्टिल यूज द फोन, टैप टू फोन, बट एंटर द पिन कोड एवरी टाइम. राइट. एंड दैट्स जस्ट अ बिहेवियरल डिफरेंस. राइट. आई नो 3 other people who would just tap their phone, उन्होंने कोड नहीं लगाया हुआ. Similarly, I think पाकिस्तान में भी for this to move forward, for the needle to move, मल्टीपल चीज़ें हैं जिसमें रास्ट का भी रोल है, जिसमें वॉलेट्स का भी रोल है, जिसमें हमारे क्रेडेंशियल्स या कार्ड्स का भी रोल है. और वीज़ा, बिकॉज लाइक आई सेड इनिशियली, इज़ अ नेटवर्क. वी हैव टूल्स एंड सॉल्यूशंस जो कि हम इस पूरे इकोसिस्टम के साथ बात कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, दैट कैन हेल्प propel this forward. Right. And Iman mentioned about an initiative by Visa. Is that a yearly thing, or do you have something that's happening these days? Actually, it's very interesting that that you bring that up, because one of the things you will see जो कि हम पाकिस्तान में करने लगे हैं और कर रहे हैं for the first time, is the first edition of a program called She's Next. Okay. And She's Next is basically an entrepreneurship program completely focused on women entrepreneurs, and from any part of the economy. They could be artisans, they could be a business around e-commerce, they could be a fintech. There is no limitation of that sort. And what that program entails is a financial grant, which we can get into later, and a year-long mentorship. जैसे कि ईमान ने mention किया, there's a year-long mentorship supported and provided by Visa to enable these businesses. And we have many case studies. Yes, region में we've been doing this for a few years, and this will be the first time we're bringing it to Pakistan. Interesting. What was the experience जो बाकी countries में हुआ है? Because ये बड़े अरसे से run हो रहा है. This is the first time Pakistan. Yes, this is the first time in Pakistan. I think the experience has been very interesting. It has been very successful. We have been able to not just see entrepreneurs being successful, but उन ख़वातीन ने जो impact create किया है. ये अभी आप जो पहले भी बात कर रहे थे कि हमने वीज़ा ने इस प्रोग्राम से रिलेटेड इससे पहले एक सर्वे कराया जिसको हम कहते हैं SME वुमेन डिजिटाइजेशन, स्मॉल मीडियम बिजनेस डिजिटाइजेशन इंडेक्स फॉर वुमेन. तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उठ के आती हैं. येस, societal barriers हैं. There are myths that women will not be able to handle leadership or stressful situations when it comes to decision making. Actually हम अपने सर्वे को देखें तो 40% respondents का ये ख्याल है. Then there are other attributes which are just inherent barriers to them. But थोड़ा सा अगर आप analogy draw करें, if you look around, women in our daily lives, the mothers, the sisters, the doctors, that we go to or take our children or nephews to, and you look at their capacity and resilience, they're doing things that me and you probably cannot do. It's true for entrepreneurship as well. अब मैं आपको example देता हूँ. Morocco में there is a marketplace, Neoli के नाम से, who won a $10,000 grant from this program, and then it went on to get another $20,000 grant from a Visa Foundation program. और ना सिर्फ वो e-commerce enable करने में कामयाब रहे हैं, बहुत सारे artisans जो कि पहले चीज़ें अपने बनाते थे और उनकी access to market, जैसे भी ईमान भी बात करनी थी, बड़ी limited थी. वो अपने ही इलाके में या फिर वो किसी middleman पे rely करते थे, तुम शहर ले जाना बेच देना. Suddenly उनका ROI, उनकी investment पे, उनके काम पे कोई 3x बढ़ गया है, because अब वो बनाते हैं, जो बनाते हैं उसमें उनको mentorship और training मिली है.
उनके जो बेसिक बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स हैं कि आपने मटेरियल इनपुट कब ख़रीदना है, कहाँ से ख़रीदना है, बल्क में ख़रीदना है, थिंग्स एज सिंपल एज दैट। और फिर मार्केट एक्सेस के बाद मार्केट प्लेस में आए हैं, इस पे आपको डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, किसको यूज़ करना है, एंड वी सी दैट इम्प्रूवमेंट इन देयर बिजनेस is very clearly reflective how they are then investing it back into their communities or their families or their young ones. So that's some of the motivation, not just in terms of success stories, but in terms of impact we think this program is creating. So I'm very excited to bring this program to Pakistan. इंटरेस्टिंग। अगर मैं इसमें पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, ये बड़ी इन्होंने इंटरेस्टिंग बात की कि वुमेन लीडरशिप एंड दिस आइडिया दैट वी हैव कि यू नो वुमेन कांट बी ग्रेट लीडर्स। मैं पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहूँगा, शायद आप उससे कनेक्ट करें। माई वाइफ एक्चुअली स्टार्टेड एन ई-कॉमर्स बिजनेस इन 2019। आई एम अ कंप्यूटर साइंस मेजर। मेरे इर्द गिर्द लोगों ने भी यही बोला, मैं भी कंफ्यूज था। उन्होंने मुझे बोला कि यार मैंने प्लानर्स बनाने हैं, डायरीज, प्रिंटेड डायरीज इन द 21st सेंचुरी। और मैंने उस टाइम के ऊपर यही सोचा कि यार मैं पता नहीं ये चलेगी नहीं चलेगी। आई हैड नो आइडिया, ऑनेस्टली आई डिड नॉट really think कि ये चलेगी। But one thing I did was I trusted her and I said, as a leader, you define what you want to do, you define the strategy, and I'll just help you in any way I can. I'll be your operations guy. Fast forward 2021, हमने ज़िंदगी में गाड़ी ली एक पहली दफ़ा, वो उस बिज़नेस की बदौलत आई, वरना मेरी औकात नहीं थी। हमने अपना पूरा घर रेनोवेट किया, 3 stories। हमने ये ऑफिस बनाया, इसको रेनोवेट किया, हमने ऊपर वाले पूरे घर को रेनोवेट किया टू द एक्सटेंट कि ये जो बिल्डिंग थी ये 80s की बिल्डिंग थी, ये डेड थी। प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक्स, फ्लोरिंग, सीलिंग सब उस बिजनेस ने किया। समथिंग दैट आई कुड नेवर हैव इमेजिन्ड, बट शी न्यू व्हाट शी वाज डूइंग। शी हैड द थॉट। Could she have done it alone? No, probably not, because the society had not allowed her to be empowered enough to do it. And so for a lot of us, maybe if the right mentorship is given and maybe if the right support is given, you'd be surprised कि बहुत incredible differences make हो सकते हैं, changes आ सकती हैं, which is why, you know, program like She's Next is incredibly important. But also for a lot of my listeners, I know for a fact that you're a lot of you guys are men. Look around, you know, your wives, your daughters, your sisters, your mothers. See what the thought they have, like see if they are interested in doing something, and maybe you can like push them, support them to see कि वो किस तरीके से कोई initiative, कोई entrepreneurship, कोई artisanship, कोई e-commerce का काम कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में बताइएगा। Is it for pre-established businesses? Is it for like medium sized? या ये fresh ideas वालों के लिए भी हैं? थोड़ा सा background दें। How do you apply for it? What happens? मैं तो ये सोच रहा हूँ मुजम्मिल दैट द केस स्टडी दैट you've described, आपने एसेंशियली प्रोग्राम का एसेंस कैप्चर कर दिया। दैट्स द एंटायर आइडिया एंड दैट्स द एंटायर कॉन्सेप्ट। कि अब मैं जिस रिसर्च की, सो बिफोर गेटिंग टू द आंसर, मैं रिसर्च की बात कर रहा था। सो द रिसर्च टेल्स अस कि तकरीबन 48%, 48% टू 50% वुमेन वो ये करना चाहती हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए। और वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है, जैसे कि आपने कहा, हैज़ बिन री इन्वेस्टेड इन टू दिस होम। एंड आई नो दैट यू हैव यंग चिल्ड्रन, द इम्पैक्ट दैट इट विल हैव ऑन दोज यंग चिल्ड्रन ग्रोइंग अराउंड मदर लाइक दैट, द एम्प्लॉयज़ दैट यू हैव, आई सी दैट यू हैव स्टाफ आउटसाइड, द एम्प्लॉयज़ शी मस्ट हैव इन देयर बिजनेस, ऑल ऑफ दैट इज़ पार्ट ऑफ द इम्पैक्ट। फिर दूसरी चीज़ हम देखते हैं, हमने इस रिसर्च से देखी कि बहुत सारी ख़वातीन जब बिजनेस स्टार्ट करती हैं, दे डिप इनटू देयर पर्सनल सेविंग्स, अप टू आई थिंक 80% डिप इनटू देयर पर्सनल सेविंग्स। बट इफ़ I will just keep using this example now. If we take this example, if they have a support system or somebody that can help them guide कि financial grant आप हमसे ले लें, आप हमसे mentorship ले लें, there are things which you can do more efficiently and we can help them with advocacy. The probability of entrepreneurship is hard, but the probability of success just compounds immensely कि अगर आप उनको ये चीज़ें provide कर सकते हैं। So in terms of the criteria, it's a very straightforward criteria. They must be, residents of Pakistan. Business जो है उसमें ख़वातीन की ownership होनी चाहिए. They must be leading it up to at least 25% of the ownership. और जो भी उनका enterprise है, उनका business है, it must operate in Pakistan. It can serve any market, but it must operate in Pakistan. और एक आखिरी चीज़ ये है कि जो उनका minimum annual revenue है वो $5,000 के लगभग होना चाहिए। एंड देन देयर आर अ लॉट ऑफ अदर डिटेल्स के प्रोसेस क्या है। That's the annual revenue, right? That's the annual revenue. 15 लाख रुपए
दैट मीन्स महीने के 1,20,000 रुपये. हाँ, इससे पहले कि आप हो सकता है आप ये पूछें, उसकी वजह है एक वो सरफेस एक फ्लो रखने की, कि इस प्रोग्राम का डिज़ाइन इस तरह का है कि जिस तरह अभी ईमान भी आपको बता रही थी कि व्हेन शी पार्टिसिपेटेड इन द अदर प्रोग्राम दे वर ऑलरेडी डूइंग सेफ पे, राइट. कि बिल्कुल आप जब आइडिया स्टेज पे हैं, वाइट बोर्ड स्टेज पे हैं, वी हैव देयर आर अदर प्रोग्राम्स फॉर दैट, बट ये उनके लिए who've now sort of broken that barrier and now they're out there and they have tested, they have product market fit. अब उस स्टेज से आगे स्केल करना comes with a separate set of So challenges. this is like more like an accelerator than an incubator essentially. Well, the label we like is she's next. Makes sense. And in that light, you will also see that we can talk about a lot more, that there's a thing we call the She's Next Club resources. Okay. So ये सिर्फ ये नहीं है कि one time event है. They will have access to mentorship for a year long, and they will have access to She's Next Club resources. And do these people, because you said it's a global program, do these people sort of connect to the global participants? So what I'm trying to understand is, क्या इससे global insight भी आएगी इनके अंदर, या ये within पाकिस्तान sandbox में ही चल रहा है? एब्सोल्युटली ग्लोबल इंसाइट भी आएगी जहाँ पे ज़रूरत होगी. सो जो इसमें मेंटरशिप है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, बिकॉज हम पाकिस्तान में ये करने जा रहे हैं विद वन ऑफ आवर पार्टनर्स विद आवर विच इज़ HBL, राइट, हबीब बैंक. सो उसमें द मेंटरशिप इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ very smart people who understand a problem or a nuance around team building or leadership जो कि यहाँ मौजूद हैं, and assets जो कि Visa globally has made available, whether it is business model canvas, whether it is कि product की आपको customer engagement बढ़ानी है तो कैसे करते हैं, क्या techniques काम करती हैं. So it's a combination of both. Makes a lot of sense. And for the viewers, if you're curious कि पाकिस्तान में ख़वातीन क्या कर रही हैं, कौन सी सक्सेस स्टोरीज हैं, देयर इज़ अनदर पॉडकास्ट हैप्पी चर्प, हमारा ही मीडिया हाउस प्रोड्यूस करता है उसको. देयर आर लॉट ऑफ वुमेन फाउंडर्स फीचर्ड देयर, गर्ल्स हु लिटरली अपने इंस्टाग्राम से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किए हैं एंड देव नाउ स्टॉक्ड इन सम ऑफ द बिगेस्ट स्टोर्स इन अक्रॉस पाकिस्तान. फैशन, कॉस्मेटिक्स, हर्बल, हर किस्म के बिजनेसेस हैं. यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट अगर आपको इंस्पिरेशनल स्टोरीज चाहिए. अगर मैं इसी को स्विच करूँ, ईमान, इफ आई वर टू आस्क यू, personally I have struggled a lot in finding women thought leaders. So आज की टाइमलाइन में जब मैं देखता हूँ कि मार्केट में लीडरशिप में कौन कौन बैठा हुआ है, तो बहुत रेयरली मुझे ख़वातीन मिलती हैं जो कि उस पॉइंट पे पहुँची हुई. अंडरस्टैंडेबल है, बिकॉज जाहिर है जो आज लीडरशिप पे उन्होंने 30 साल 20 साल 10 साल पहले शुरू किया तो टाइम्स फ़र्क थे, और अब हम फाइनली उस पॉइंट पे हैं जिस पे हम एम्पावर करना शुरू किए हैं. 10 साल बाद लैंडस्केप बहुत फ़र्क होगा. But if I were to ask you, what can we do to support women who have high potential women? Like you had that support through the Visa initiative. You had that support through the support of your father as well, who integrated you into the business and essentially mentored you throughout all those years. But using your own experience, if you were to speak to guys out there, and the role that they can play in supporting the women around them, क्योंकि again मैं बार बार ये बात करूँगा, this is not a nice to have anymore. When petrol is priced at 330, scheduled to go even higher, when the economy is going through, and not just the Pakistani economy, the global economy is going through a cycle where it's going to be a tough few years, तो फिर वो एक definitive चीज़ होगी कि यार मेरे दिन के इतने घंटे हैं, can I make them productive? Can I be a part of the economy? Can I support the country and support my own household? It is less about कि मैं वो support करके मैं party करूँगी, and more about the fact कि यार आप एक partnership हैं, make it easier for everyone, right? So in terms of the men who are watching, what role can they play in supporting the women around them? I think the best thing men can do is be champions for the women in their life. I think the greatest gift my father gave me was the idea that he didn't want me to depend on anybody. He told me when I was much younger, I said, I don't even want you to ever have to depend on me. I want you to have your autonomy and be free. It is the greatest gift my dad gave me because he was rooting for me always. Like before I started working at Safepay, I remember asking him like, what if I fail at this? He goes, you will never know till you jump. You have to do it. So I think what you can do is root for for the women in your life, because they're capable of extraordinary things. They're already doing extraordinary things. You can't hold them back. You have to let them thrive, because as it is, when they succeed, they give back to their communities, to their families, and
they live, women should be allowed to live lives of meaning. And when women are pursuing something that is their passion, and now because of the internet, they can do it from you can be a full-time mom and work. You can do so many things, and I'm always impressed by the women I see who are doing things. So I think what you could do is just support the women in your life, champion them, encourage them, because it's good for you and it's good for everyone. And a lot of times, listen to them, right? Yes, listen to them. They can tap into some amazing things. Like what you said, your wife tapped into something where you were like, why would someone use a planner? Yeah. By the way, I still use like a hard copy thing. Yeah. So because your wife has insights that you don't. Absolutely. And I mean, a lot of the brands we work with, most of their customers are women. So women have buying power as well. Not just buying power as well. I mean, I was reading a study, almost 80% of all e-commerce traffic is being driven by women because they're the consumers. Yes. And so I have no idea how they think. It's going to be women who understand the women perfectly. And they can really tap into different problems, different things, use different resources. And they're very communal in nature. So they will always uplift their community. Bilkul. And one of the reasons why I'm so passionate about this, look, again, I'm trying to speak to the guys out there. ये सिर्फ ये नहीं है कि women को empower करो, मैंने अपनी बेगम को empower किया तो वो independent हो गई और बड़ा कमाल हो गया. It's partnership through and through. मेरा personal experience ये रहा है. मैं 2015 से 2017 तक एक नौकरी कर रहा था. मैंने पूरी ज़िंदगी वो नौकरी करनी थी क्योंकि मुझे वो स्पेस नहीं मिलनी थी जिसमें मैं जो मेरा रोल बना हुआ था एज अ गाय जिसने घर चलाना था, उस रोल में मैं एक महीना भी ऑफ लेता और बिल्स नहीं जाते. जब मैंने अपनी बेगम को इनिशियली सपोर्ट किया एंड आई मीन शी वाज द वन ड्राइविंग इट, आई सपोर्टेड हर. What that did was कि एक point आया where she was able to drive the revenue and I took some time off to realign what I was doing. If I were to, अगर मैं आज honestly compare करूँ ना, 2018 में मेरी आखिरी महीने की जो सैलरी थी और इस महीने में जो मैंने कमाया है, तो मैंने ऑलमोस्ट 50 माशाल्लाह से 70x ज़्यादा कमाया. माशाल्लाह, that's lovely to hear. मेरी ज़िंदगी में उसका अगर मैं एक बंदे को क्रेडिट दूंगा ना, मैं अपनी बेगम को दूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे वो टाइम दिया कि यार, you know what, like listen, take some. And a lot of men don't realize that कि as men we don't have that space as well कि हम जो है ना अपना वो follow कर सकें. It was my wife who was able to say कि listen, I'll hold the fort, you go and pursue what you want to do. And she was able to do that because I was able to support it. So it's all connected. It's all a partnership. And it's really, really important that now we really begin to think कि how can we work together. आपने बात बोली. We need to work together. How do we work together, right? Because times are tough and individually हम नहीं कर सकते. We can't, and we won't get out of it if we leave half the economy behind. Absolutely. We will get out of this or better ourselves when everybody is participating in the economy 100%, in their own way. 100%. Umar bhai, you've been around many different countries. आपने बाकी दुनिया में देखा है कि women participation in the workforce कैसी है और कितना वो impact लेकर आती है? What are your thoughts on? Yeah, absolutely. लेकिन उससे पहले I think जो to extend on what you just explained about two people supporting each other, she's next में what we know is कि women are going to do this with or without us. But we want to be there to support them because it is also good for business. Right. It is not just a social impact initiative. और दूसरी कंट्रीज़, येस, म्यांमार की मेरे लिए बड़ा फैसिनेटिंग ये था. आप यंगोन में जाएं, यू गो अराउंड द मार्केट्स, वो भी चाय के बहुत शौकीन है हमारी तरह. और शाम 6 बजती है और आपको हर जगह, और वो चाय बनाते हैं, चीनी नहीं डालते उसमें, वो कंडेंस मिल्क डालते हैं. अच्छा. सो इट टेक्स इट टू अनदर लेवल. लेकिन आपको हर चाय की दुकान से लेके मोबाइल शॉप से लेकर ऑर्गेनाइज्ड रिटेल में आपको फ्रंट ऑफिस में फ्रंट एंड पे स्टाफ जो नज़र आएगा वो सब ख़वातीन हैं. और इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू नॉट जस्ट सी बट ऑल्सो एक्सपीरियंस के देर इज़ एब्सोल्युटली अ हायर लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस एंड एफिशिएंसी इन बुक कीपिंग प्रैक्टिसेस एट्सेट्रा. वहाँ से आप इसको लेके जाएँ, extend करते हैं to Scandinavia or to Norway. Again, women are driving the economy. They are also driving other aspects of society, such as arts, such as show business, such as opinion making.
एंड इट्स वेरी क्लियर. एविडेंस अब ये कहता है कि if we assume or if we envision for a minute that equal number of women are participating in the global economy or starting from the country level to global economy as men, तो ये 2028 तक कोई up to $30 trillion का impact create हो सकता है. और वो obviously like हमने पहले भी मैंने कहा और हमने आप लोगों ने कुछ examples भी दी कि that impact, when women are creating that impact, a lot of that is reinvested back into their families, their communities, their businesses. So a lot of people benefit from it. Makes sense. Iman, थोड़ा सा मैं conversation में flip करूँगा towards Safepay. I want to understand, obviously, digital payments की हमने बात की. It has been a fairly excruciating experience to integrate payments and I'm super excited. Again, मैं अपने e-commerce के उसकी बात करूँगा. 2019 में जब ये हो रहा था तो I really wanted to do it. उस टाइम के ऊपर तो मजाक ही कोई नहीं था. इक्का दुक्का कोई प्लेयर था और वो इतनी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन लेकर आती थी कि आप कहते थे कि भाई रहने दें, मैं कैश ऑन डिलीवरी पे ही मैनेज कर लूँगा. बट अब I feel like now things are moving at a much faster pace. Tell me about what you guys are doing. How has it panned out? Overall response कैसा रहा है? And ये आपने बहुत interesting बात की कि you can tap into global payments as well. So a lot of people have historically had this problem. जिस तरह let's say कोई software house है या services agency है जो कि payments लेना चाहती थी और वो कहते थे कि यार platforms नहीं exist करते, ये नहीं है, वो नहीं है, but now they can theoretically take a credit card from anywhere in the world. Is that something that's happening? Is that possible? Tell me about Safepay. So we started around 2020, and we're the first fintech from Pakistan to go through Y Combinator, backed by Stripe, and we are in the pilot. Have a pilot license with State Bank and PSO PSP. So we're in our scaling period right now. And with this kind of we're onboarding a lot of businesses, we're working with multiple brands in Pakistan, we're also working with small businesses. So what we see is a lot of our businesses are accepting payments from around the world. In fact, a lot of our payments skew a lot more international. We actually accept all kinds of card payments, and it makes a big difference for a business when they can go digital. We're trying to be as good about the process as we can be, that onboarding is easy, that it's digital, while doing the know your customer process so that it's secure, so that when you pay through Safepay, you know that we vetted the business that we're onboarding. Right. As we scale up in the next few months and inshallah get our commercial license, then we will really open the floodgates and onboard all kinds of businesses. Right. And because we want Pakistanis to join the global economy, we want to empower every business to accept digital payments. Right. And we want to do it through various rails, including cards, banks, wallets. हाँ, ये बड़ा एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये आने वाला था कि इज इट जस्ट कार्ड्स या लोकल? अगर मैं इस तरह लोकल करता हूँ तो फॉर एग्जांपल मैं एक सर्विसेज कंपनी हूँ और मैंने पेमेंट्स एक्सेप्ट करनी है. मैं बड़ा ऑनेस्टली बताता हूँ आपको, मैं आई डू one-on-one मेंटरशिप्स एंड जनरली वो बड़ा एक सॉर्ट ऑफ एक्सक्रूशिएटिंग सा एक्सपीरियंस होता है क्योंकि पाकिस्तानी बाहर की सर्विसेज एग्जिस्ट करती हैं. जब आप बाहर का करते हैं तो वो फिर बेसिकली हो क्या रहा है कि वो डॉलर में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वो PKR में आ रहा है, तो एवरीबडी लूजेज अ लॉट ऑफ मनी. लोकल की जब मैं बात करता हूँ तो मुझे फिर या तो अगर मैं पेमेंट का सोचता हूँ तो उस पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बट नॉट एवरीबडी इज़ डूइंग दैट. वो कहते हैं कि यार मुझे घंटा बुक करना है, मैं Easypaisa या बैंक ट्रांसफ़र कर सकता हूँ. वो अगर Easypaisa और बैंक ट्रांसफ़र अनफॉर्चुनेटली मुझे ऑटोमेट होता नज़र नहीं आता बिकॉज वो फिर स्क्रीनशॉट पे डिपेंडेंट हो जाता है. नाउ आई हैव टू हायर समवन टू मैनेज ऑल ऑफ दैट. Is there a way to create a centralized system where you have a wallet, automated होगा, you have a this or that or whatever, वो automated होगा, वो real time पे authorize होगा और वो मेरी website को पता लग जाएगा and I can actually give access as well in terms of the process? So we accept card payments, debit and credit, but we are also right now we're working to accept wallet payments as well. Across all major players? Yes, that's what we're working towards. Interesting, and that will be automated. Like वो wallet से transfer करेंगे, वो खुद ही से authorize, वो जैसे आपकी website में अपनी wallet details डालेंगे and it will go through.
I don't have to do anything about. You don't have to do anything. It'll show up in your Fascinating. merchant dashboard, and you'll be able to see that the payment's been made. Fascinating. So And the paying experience will be easy, and then the payment acceptance experience will be easy as well. right. And right now you guys are in the, like, abhi jo aapka license hai, it's like a test license of It's a sorts? pilot license, Okay. yeah. So what does that entail? It entails, like, basically once you hit pilot, you have certain you can onboard these sorts of businesses. We're sticking to e-commerce mostly at the moment. Is there a limit to the amount of businesses you can onboard as well? Somewhat. Okay. And then once you kind of get vetted further by the state. There are 3 big hoops to jump when you're fully licensed. There's in principle approval, there's pilot approval, and then there's commercial. So we are in the pilot stage, and we're working with State Bank to hit the last stage. Right. So in this stage, you're vetted extensively by State Bank, so that then you're given full approval. And in terms of services businesses, are they able to onboard right now? And if not, will they be able to onboard in the They will future? be able to in a few months. Okay. Yeah. And once Some service businesses we do service, but mostly we're working with e-commerce at the moment. and in terms of जब services आता है तो उसमें automatically वो आ जाता है ना कि invoice generation. Yes, we're working on launching that product soon. अच्छा, so that'll be there Yeah, as well. yeah. Awesome. We're launching subscriptions soon as well. Oh, really? Yeah. That's great for content We're gonna be the creators first, we're going to be the first fintech in Pakistan to really launch subscriptions. Excellent. And that's built around, again, credit card, debit cards only? Yeah, or subscriptions you can't do with wallets. wallets and stuff, but you can with credit and debit cards. Excellent. And so that means that, just to confirm, for apps and all of those guys, they can actually Yes. वो app के पीछे जो है वो SafePay का gateway लगा हुआ है और वो manage कर रहे हैं. Yes. Excellent. We're just about to launch it. Right. Umar, tell me about Visa. Again, everybody knows that you guys are the backbone of the financial system, but off camera we were talking about some of the initiatives that you guys have, what the products that you guys have in terms of fraud detection and stuff like that. What all goes through and what all sorts of products do you offer in Pakistan? So ek to, I think, to sort of touch upon your question that you asked, Iman, the problem statement that you're defining. So interestingly, part of that solution exists today for jahan pe, you can accept a payment from multiple mechanisms and your website is informed that you don't, but then parts of it like subscription, etc., don't exist, which Safepay is building. But coming back, connecting this to a previous point I made around financial literacy, there is still some work on literacy. So while the product is, there is work on the product that there should be done, needs to be done, there's also on awareness and education. And in terms of Visa, we have some focus areas, right? Ek to, like I said in the beginning, at the core we believe that we must lift everyone everywhere by making payments and money movements easy. And what that means is that there could be multiple mechanisms, that whether it is a card or a watch or a wallet or हम Raast को RTP कहते हैं, real time payment system like Raast. There is a mechanism based on the customer's choice and preference जहाँ पे वो participate कर सकें. So one of the things that I personally think is very interesting, और वो हमने भी कुछ पार्टनर्स के साथ लॉन्च की है, कुछ के साथ पाइपलाइन में है, इज़ समथिंग वी कॉल टैप टू फोन और सॉफ्ट पॉस. टियर 2 में जब आप जाते हैं, हर दुकानदार को मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं है. कुछ जो हैं वो अपने फ़ोन पे कार्ड टैप करके पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं. वाइल दैट आई थिंक हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, उसमें और बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, कनेक्टिविटी, एजुकेशन एट्सेट्रा. बट जो बात हम पहले कर रहे थे ना कि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं और कुछ चीज़ें हैं जो सीक्वेंशियल हैं कि एक चीज़ ठीक होगी तो दूसरी उन रेल्स पे बिल्ड होगी. कुछ चीज़ें जो पैरेलल हो सकती हैं. वाइल वी आर फिगरिंग दिस आउट, थिंग्स लाइक टैप टू फोन हम मार्केट में शुरू कर सकते हैं. और पार्टनर्स जैसे HPL, बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स इन द कंट्री, दे आर वेरी गंग हो अबाउट दिस इनिशिएटिव एज वेल. देयर आर पार्टनर्स इन शी इज़ नेक्स्ट. इसके लिए किसी चीज़ का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है. देन सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ यू टच्ड ऑन फ्रॉड कंट्रोल, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज मैं आपको अपनी जो रिसर्च बता रहा था ऑन SMB इंडेक्स, द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स दैट वी स्पोक टू, दे वर ऑल्सो अवेयर कि जहाँ पे उनको एडवोकेसी और बिजनेस ट्रेनिंग और नेटवर्किंग की ज़रूरत है, ऑलमोस्ट 80 to 90% पर अवेयर दैट व्हेन दे आर एक्सेप्टिंग डिजिटल पेमेंट्स और पुटिंग बिजनेसेस ऑनलाइन, they need to upskill or improve their awareness around cybersecurity.
and what can they do, which is very encouraging. And like I said कि जो हम ये करना चाहते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू कि अवेयरनेस जब है और वो टूल्स की एक्सेस चाहते हैं और उनमें कैपेबिलिटी भी है, सो वी वांट टू इनेबल देम बाय गिविंग देम एक्सेस टू दोज टूल्स or those experts. So, and what that does is that helps them not just improve their businesses, but also put in place the right level of controls. You mentioned the tap to phone. I remember एक startup था who's basically doing machines in Pakistan, और उनसे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा यार एक मेजर मसला ये रहा है पाकिस्तान में कि अगेन आप मेन सिटी डाउनटाउन एरिया में तो आपको हर बंदा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेता नज़र आता है, बट जैसे आप थोड़ा सा पेरिफेरीज में जाते हैं तो पेट्रोल स्टेशन भी नहीं ले रहा, दूसरा भी नहीं ले रहा. ठीक है, उसमें एक परसेंटेज का भी मसला है कि मार्जिन कॉल्स बहुत थोड़ी हैं, तो नो बडी वॉन्ट्स टू लेट गो ऑफ दैट अनफॉर्चुनेटली. बट लार्जली मसला ये है कि द बाय इन इज़ एक्चुअली वेरी कॉस्टली और हिस्टोरिकली हैज़ बिन वेरी कॉस्टली. कि एक मशीन जो ख़रीदनी है, क्योंकि वो एक सर्टन लेवल ऑफ रेवेन्यू का बार होता है कि यार इतना आप रेवेन्यू कर रहे हैं तो फिर मशीन देगी आपको कंपनी. टैप टू फ़ोन essentially could bypass all of that because जो हार्डवेयर की कॉस्ट है वो थियोरेटिकली एब्जॉर्ब कर लेगा मर्चेंट खुद, और वो जो क्योंकि वो फ़ोन है, सो इट्स नॉट अ डेडिकेटेड डिवाइस, सो ही कैन essentially इज़ इन्वेस्टिंग ऑन अ प्रोडक्ट जो कि वो डेली लाइफ में भी कर रहे हैं. हाउ सीरियसली आर यू गाइज परस्यूइंग दैट एंड हाउ व्हाट्स द पोटेंशियल दैट यू सी विद दैट? It is one of our top things to do in Pakistan for the next 1 year, 18 months, 24-month period. लेकिन ये जो आपने the way you defined this sort of situation or the problem statement, यही tier 2 city में आप देखें, if you talk to your biggest marketplaces, apparently depending on who you speak to, between 40 and maybe Iman can help sort of corroborate that number, 40 to 60% online shopping tier 2 city से हो रही है, tier 3 से भी हो रही है. So which means कि while एक साइड पे barriers हैं, दूसरी साइड पे डिमांड एग्जिस्ट करती है, कस्टमर बिहेवियर इवॉल्व हो रहा है. तीसरी साइड पे भी आप देखें, सो देर आर द कनेक्टिविटी प्रोवाइड्स द कंट्री, द टेलीकॉम प्रोवाइड्स द कंट्री, they really want to make a push for a 4G for all sort of an initiative. So connectivity की enablement भी हो रही है. And अब हम एक तरीका ये कि हम इसका इंतज़ार कर सकते हैं. कनेक्टिविटी आएगी, लिटरेसी आएगी, डिमांड आएगी, और उसके बाद हम जाएंगे. दूसरा तरीका ये कि इन पैरेलल, विच इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. एंड यू राइट कि नाउ विद दिस theoretically with this solution, any merchant will not need to invest in a POS device. They will be able to use their NFC phone to accept payments. And of course, they can either dedicate the phone or use it for multiple reasons. We will see how that evolves. और हम कर ये रहे हैं because we're a network. हम ये पार्टनर्स के थ्रू कर रहे हैं. एक पार्टनर उसको अगर कराची की, सिंध की अच्छी समझ है, and distribution network है उसका. Yeah, so they are the ones who should be driving this. Another partner जिनको फैसलाबाद की, पंजाब की उस बेल्ट की अच्छी समझ है, they are the ones who should be driving that. And then we have, like I said, our partners like HBL and others who then support us in these initiatives. I'm going to ask you, Umar bhai, if you could tell me what's next for she's next, but what's next for Visa, and what's the core for you guys this year and moving forward? I think in the spirit of celebrating women entrepreneurship and the She's Next program, I would really like to highlight some things which make me very proud to work for a company like Visa. The She's Next is not one program in isolation. जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे पास one of the biggest banks in the country is a partner, इसके पीछे research है. When I take a step back and take a broader view of Visa actually has a very serious commitment towards diversity and inclusion. Whether it is आप पाकिस्तान ऑफिस में देखें तो हमारी जेंडर डाइवर्सिटी इज़ एक्चुअली इट्स 50-50, एक्चुअली मोर देन 50% इन फेवर ऑफ वुमेन. ये जो रीजन जिसको हम कहते हैं नॉर्थ अफ्रीका, लेवांट एंड पाकिस्तान, इस रीजन में ऑलमोस्ट 45 to 49% वी हैव वुमेन इन आवर टीम्स. आप लीडरशिप देखें ना सिर्फ इस रीजन की, सिमिया रीजन की, ग्लोबल, वी हैव 30 to 35% रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन.
Here there are programs, which support women when they come back to work after a period of absence. There are active networks of women which have access to tools and resources. So all of this combined, this is not something which is one-off. And like I said, okay, we've done this in the region for the last few years, been very successful. So I'm very excited. Ek dafa the ball starts rolling. We go out with this program. And the winners and everybody who will be able to experience this, they will have access to a lot of other assets, which that's Iman has been able to also talk about. Makes sense. And for all of you guys, if you are a woman entrepreneur, if you know a woman entrepreneur, if you have someone in your family, we're going to put a link down below if you guys can share that with us. And Yes, you can check out the campaign, you can check out the all the details will be there, and I believe you can apply from there as well. These guys have launched a couple of weeks ago, and I think थोड़ी सी deadline भी pass है, so make sure कि आप फौरन से उसको देख लें और apply कर दें. It's an excellent initiative, and I hope that you get in and make the most out of it. Iman, I'm gonna ask you one last thing, and then we're gonna wrap it up. Safepay का मुझे बताइएगा, what's the future for Safepay? How do you see it? I mean, you said it's in a test pilot phase right now, but what's the future that you see for Safepay and overall the industry? And in pilot phase, we're operating and serving lots of businesses. For the future for Safepay is, what we see is our goal is to onboard thousands of Pakistani businesses and help them accept digital payments easily. We build tools so they can do this simply and so that the user experience is good for them while accepting payments and for their customers while they're paying. Right. And do you think जो ये वाली जो इन्होंने फ़ोन टैप टू वो किया है फ़ोन वाली, do you think you'll ever, because आप डिजिटल के कंपोनेंट में तो हैं, ग्लोबली हमने देखा कि जो डिजिटल पेमेंट्स वाली कंपनीज हैं वो इस पे भी आ गई कि इवेंचुअली उन्होंने इनेबल कर दिया कि ठीक है, आप बजाय इसके कि आप कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन डालें, यू हैव लाइक अ पॉस एज वेल जो कि डिजिटाइज. डू यू थिंक you'll ever go there as well? Not in the immediate future, but eventually, who knows? Right now, we're focusing more on online payments. Makes sense. Locally and internationally. Makes sense. Guys, thank you so much for coming in and sharing all that insight. If I were to ask you one last question that I ask all of my guests, how do you see, and both of you have extensive international experience, and then with that you choose to work in Pakistan, there's a certain level of optimism required for that, and I hope you're able to channel that energy in answering this question as well, contrary to what I've been hearing from a lot of my recent guests. But how do you see Pakistan in 27 years, knowing what you know now, seeing what you've seen? And there is a slight caveat there. You can't tell me about the 60% youth population, and you also can't tell me if this happens, then this will happen. I want you to take what you see around right now and then try to extrapolate a very authentic image of what 27 years from now ka Pakistan will look like. Umar, we'll start with you. So like you said, I will not go on in the ifs and buts, but just the city that we're recording this from, I think it's a great city to be in terms of the environment, the weather, and that alone sometimes keeps me here. But fast forward, and I think this could be a country where we are able to capitalize on the opportunity which is in front of us in terms of IT exports. We see at least a lot of people talking about it. This could be a country, given the natural beauty it has, which could also become a tourist or a tourism hub or a destination. And this could be a company this could be a country which is where money movement is easy, is digital and is easy, and people have access to savings and lending products. There's a lot more that heart desires, but I think ये तीन एक चीजें हैं where there is Very high potential, a lot of conversation, and urbanization and etc. To conclude this, I would say, I don't remember who said this, but I really like this quote where by one of the very successful entrepreneurs is, as humans we sometimes are not great at predicting short term, saal, 2 saal mein kya hoga. We're actually very good कि क्या होगा, but we're not great at predicting कि 10 साल बाद क्या होगा या 15 साल बाद क्या होगा. So with that, I am very optimistic. makes sense. Iman, what are your thoughts? So
I'm the kind of person who, when I think 27 years from now, I always think that the only constant is change. Because of my travels and because of what I've seen, I've consistently seen change. Now, how that change plays out depends entirely on how we behave in the present. And I wouldn't say youth, but what Pakistan has is numbers, a population, right? How this population now behaves is crucial. Does this population leverage the internet to grow? Because it can. Does this population use digital payments to really join the global economy and grow? It can. But I think I see change for this population, and I'm optimistic that it will, because I see people do it on a daily basis. I'm optimistic that they will use all the tools that they have and progress. Makes sense. Guys, thank you so much for coming in and sharing all that insight. And I look forward to the success stories that She's Next is going to bring out. Thank you so much for Thank you, Muzamil. It's lovely to be here. Thank you so much for having us. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको एपिसोड पसंद है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा. मुझे बताएं in the comment section what are your thoughts on Visa, digital payments, Pakistan's economy, women participation in the economy. Have you seen success stories of women entrepreneurs, women in leadership roles? If you have any recommendations, let me know in the comment section below. I'd love to speak to women leaders on the podcast as well. And if you want to, again, shout out to She's Next, check it out. The link is down below. If you know someone जिसके लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है. बट एनीवेज यूट्यूब वाले लाइक कमेंट दबाएंगे, जो बढ़ के ज़्यादा लोगों को तुम्हारी कन्वर्सेशन पहुंचेगी. ऑडियो प्लेटफॉर्म वाले सब्सक्राइब बटन दबाएंगे, आने वाले एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. नीचे दी गई हुई लिंक के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ स्ट्राइप की लिंक यूज़ करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं एंड हेल्प अस रिमेन इंडिपेंडेंट फॉर एज लॉन्ग एज वी कैन. बट एनीवेज, दिस वाज सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.